लागू की गई और 2017 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था और समिति ने अपनी जो रिपोर्ट थी वो 31 मई 2019 को पेश की, जिसे 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा से मंजूरी दी गई, जिसका मकसद हर एक इंसान को बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ने के लिए, उसको विकसित करने के लिए प्रोत्साहन करना था। और इसी के साथ जो सकल नामांकन अनुपात है यानी GER उससे 26.3% से बढ़ाकर 50% करना था। NEP में एक और नियम दिया गया था कि 2024 तक जो सभी उच्च शिक्षा संस्थान हैं वे बहुविषयक संस्थान बन जाएं, जिसमें 3000 या 3000 से अधिक छात्र होंगे। इसी के साथ 2030 तक हर जिले में एक बड़ा सा एक बहुविषयक संस्थान हो, ये भी उनका एक नियम था। हम देखते जो इस NEP 2020 का एक और मकसद था वो ये था कि भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाया जाए, यानी ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर, जिससे हर भारतीय को अपने विकास पर, अपने विचारों पर, अपनी बुद्धि पर एक गर्व हो और वे अपनी नॉलेज को, स्किल को, वैल्यूज को और जो उनका आत्मविश्वास है वो उनका बड़े विकसित हो और जिससे मानव अधिकारों और वैश्विक कल्याण और जो हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके प्रति जो समर्पण है उसको और मजबूती प्रदान हो। हम देखते हैं इस में जो सभी विषयों पर रिसर्च की जाती है उसको और बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का भी प्रस्ताव इसमें रखा गया ताकि जो रिसर्च है, जो शोधकर्ता है, उनको और बेहतर जो रास्ते हैं दिखाए जा सके और वो अपनी नई दिशा की ओर आगे बढ़े। इसी में एक और सुझाव दिया गया था कि जो उच्च शिक्षा है उनकी देखरेख के लिए बस एक संस्था बनाई जाए जिसे भारतीय उच्च शिक्षा आयोग कहा जाए, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका मकसद भी यही था कि जो अलग-अलग कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उन्हें एक ही संस्था निगरानी करे, उसकी देखरेख करे और सभी जगह एक ही नियम लागू किया जाए जिसके तहत सबको चलाया जा सके। हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो NEP 2020 में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें अगर जो हमारा ग्रेजुएशन है उसकी 3 और 4 की अवधि निर्धारित कर दी गई, जिसमें अगर कोई छात्र है वो किसी विषय या क्षेत्र में अध्ययन करता है तो फर्स्ट मतलब पहले साल के बाद अगर वो छोड़ देता है तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वहीं अगर वो 2 साल के बाद छोड़ता है तो उसे डिप्लोमा और 3 साल के बाद अगर वो अपने अध्ययन को छोड़ता है तो उसे डिग्री। और अगर कोई छात्र जिससे रिसर्च में इंटरेस्ट है, जो रुचि रखता है अपने शोध कार्य में, तो उसे इस 3-4 के कार्यक्रम के दौरान अपने रिसर्च प्रोजेक्ट पर कार्य पूरा करता है तो उसको डिग्री के साथ साथ उसका शोध कार्य भी शामिल किया जाएगा। इसमें हम सबसे अच्छी बात देखते हैं कि इसमें एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट शामिल किया गया है कि अगर कोई छात्र किसी विषय में रुचि रखता है तो उसके जो क्रेडिट उसे मिलेंगे वो एक डिजिटल रिपोर्ट में ऐड कर दिए जाएंगे। और इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ और मैं सैफ अली वो मास्टर और PhD के कार्यक्रमों पर NEP के जो प्रभाव है और उसकी जो लाभ है उस पर चर्चा करेंगे। दूसरे मुनीर हैं वो वर्तमान में जो उच्च शिक्षा के कुछ चुनौतियां भी हमारे सामने आई हैं वो उस पर अपने विचार हम सबसे साझा करेंगे। और महीन प्रताप जो NEP की जो शिक्षा नीति है उसके जो उद्देश्य हैं उस पर और उसके निष्कर्षों पर अपने विचार हम सबके साथ रखेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड प्लीज कम सैफ अली। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि मेरे कलीग सोनभद्र ने ये बताया कि ग्रेजुएशन में जो है अब 4 साल का ग्रेजुएशन का जो प्रोग्राम है वो शुरू कर दिया गया है और इसके बाद में अब जो है PhD और मास्टर्स प्रोग्राम के बारे में बताने जा रहा हूँ कि पहले जो MPhil हुआ करता था वो MPhil को अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और PhD प्रोग्राम 4 साल के लिए जो है वो बनाया गया है। उसके बाद
जो है कि जैसे कि सुनवर ने पहले बता दी है कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिस्ट पॉइंट बनाए गए हैं कि बच्चे अगर एक साल किसी वजह से एक साल के बाद अपना ग्रेजुएशन छोड़ना चाहे तो उसे सर्टिफिकेट, और 2 साल के बाद अगर छोड़ना चाहे तो वो डिप्लोमा, और 3 साल के बाद अगर कोई बच्चे अपना पढ़ाई को छोड़ना चाहे तो उसे ग्रेजुएशन जो है अवार्ड किया जाएगा। उसके बाद जो है मैं एडवांटेज ऑफ हायर एजुकेशन, एडवांटेज ऑफ NEP इन हायर एजुकेशन के बारे में बताने वाला हूँ कि इनका जो NEP 2020 का सबसे पहला मकसद ये है कि हिंदुस्तान के युवाओं को 100% साक्षर बनाया जाए, जिसके तहत करीबन 3.5 करोड़ नए सीट जोड़े जाएंगे इंस्टीट्यूशंस में, और 2035 तक 50% ग्रॉस एजुकेशन इनरोलमेंट जो रेशियो है उसे बढ़ाया जाएगा। और इनके बाद मैं बात करता हूँ कि जो पहला एडवांटेज है क्रिएटिविटी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट। इसके तहत मल्टीपल डिसिप्लिनरी अप्रोच रखा जाएगा। जो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं उसे अब जो है वो ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स जैसे सब्जेक्ट को भी रख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इससे ये फायदा हुआ कि अगर कोई सिविल इंजीनियर डैम बनाता है और तो उसे ये भी मालूम होगा कि ये डैम का इम्पैक्ट सोसाइटी और इन्वायरमेंट पे क्या होगा। और जैसे आजकल इंजीनियर एंटरप्रेन्योर बन रहा है, तो अगर कोई इंजीनियर इकोनॉमिक्स पढ़ता है तो वो कहीं न कहीं बेहतर एंटरप्रेन्योर बन सकता है। और इसके बाद जो है कि इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, जो वोकेशनल कोर्स है उसे प्रमोट किया जाएगा। इन सब के लिए जैसे IIT दिल्ली जो है अपने ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट को ओपन किया है, और IIT खड़गपुर स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज ओपन किया है। और इन सब को रेगुलेट करने के लिए अब जो UGC और AICTE है, उन दोनों संस्थाओं को मिलाकर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। और ये जो है पूरे हिंदुस्तान में जो हायर एजुकेशन है एक्सेप्ट मेडिकल साइंस और लीगल कोर्सेज को छोड़कर ये रेगुलेट करेंगे। ये एक एपेक्स बॉडी है, इसके अंतर्गत कई ऐसे बॉडी आते हैं जो रेगुलेटिंग करने के लिए NHERC और फंडिंग करने के लिए HEGC और एक्रीडेशन पॉइंट सिस्टम और नंबरिंग करने के लिए यूनिवर्सिटी को जो रैंकिंग किया जाएगा वो NAC के द्वारा किया जाएगा। और इन सब का जो आउटकम निकलेगा उसे GEC जेंडर एजुकेशन काउंसिल देखेगा। इनके साथ साथ कई रेशनल इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर भी बनाया गया है। रिसर्च के लिए रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा, और टीचिंग के लिए टीचिंग इंसेंटिव यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा। और जैसे हम ये देखते हैं US में कोलंबिया में जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, जिसकी ब्रांडिंग पूरे ग्लोबल में पूरे विश्व में काफ़ी होती है। ऐसे अप्रोच को भी देखने के लिए ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज बनाए जाएंगे। इनके बाद ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा और इंडियन लैंग्वेज जो है उसे भी प्रमोट किया जाएगा। थैंक यू सो मच। आई वुड कॉल मुनीरुज़्ज़मा। थैंक यू सो मच। Thank you all. As we mentioned, our first dog co-presenter conveyed the overall view is NEP 2020 and its benefits. Now we discuss this NEP 2020's some problems. When we talking about the problems,
the, it means there will be some barriers, some challenges, some foundations, some issues, and some smooth situation which we non familiar this system. जैसे कि हम जानते हैं NEP 2020 जो नया सिस्टम लेकर आए हैं, जो मल्टीपल एग्जिट एंट्री जो सिस्टम है, इसका तो बेनिफिट है एक वन साइड, बट इसका जो अनदर साइड जो पॉइंट ऑफ व्यू, माय पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हमारे सामने ज्यादा ऑप्शन रहे तो उसमें ज्यादा कंफ्यूजन और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आती है. फॉर एग्जाम्पल, जब NEP 2020 में एक बच्चे अगर 1 साल कंप्यूटर को सर्टिफिकेट 2 साल डिप्लोमा अगर दिया जाए, तो इसके हिसाब से अगर बच्चे अगर कोई मजबूरी होंगी तो पढ़ाई छोड़ के वो काम कर सकते हैं या जॉब कर सकते हैं. इसका मतलब उसका जो एजुकेशन सिस्टम में जो डिसकंटिन्यूटी आया है, उस फिर बाद में जाके 1 साल 2 साल या 3 साल बाद जाके फिर जब वो इस कोर्स में जाकर फिर वो एंट्री करेंगे, जो डिसकंटिन्यूटी लाएंगे है. और NEP के जो मेन मोटिव है जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, और उसी को लगता मेरे हिसाब से लगता है वो बैड है. और NEP के जो इसमें था 4th ईयर स्टूडेंट के लिए जो रिसर्च प्रोजेक्ट ये किया गया, लेकिन अगर बच्चे को अगर क्वालिटी एजुकेशन नहीं हो पाएगा उसके डिस्पैरिटी की वजह से, तो कैसे रिसर्च कर पाएंगे आगे जाके. और इसी हिसाब से और एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, वोकेशनल ट्रेनिंग. NEP 2020 जो इम्प्लीमेंट किया गया, वोकेशनल ट्रेनिंग को ज़्यादा इंक्रीज किया जाएगा. तब वोकेशनल ट्रेनिंग को अगर इंक्रीज करने के बाद हम जब करते हैं, उसमें 2 चीज़ आती है. एक ट्रेनर होना चाहिए, उसका एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए. अगर हम देखते हैं तो सिटीज और जो मेजर जो सिटीज है, जो अर्बन एरिया, वहाँ पे तो ठीक है, लेकिन जो बिल्कुल रिमोट एरिया में जो बच्चे रहते हैं, गांव में रहते हैं, वहाँ पे बिल्कुल इसका अच्छे ट्रेनर अवेलेबल नहीं है. तो कैसे इस चीज़ को हैंडल करते हैं? तो इस बात से मैं मेरा एक क्वेश्चन खत्म करता हूँ. इसके बाद मैं कंक्लूजन पार्ट के लिए हमारे जो को प्रेजेंटर महेंद्र सिंह को बुलाएंगे. Last 4 minutes, sir. Good morning, everyone. I'm the coordinator, Group PSG18. My topic is NEP, impact of NEP in 2020, especially in higher education. My co-presented first, second, third cover major parts. I focus only its role and purpose in higher education. The NEP 2020 is very important and latest and recent new education policy come our existence, especially in the whole scenario of the education systems. I hope it will be the very revolutionary and very impactful the upcoming futures, shaping the Indians, youngers and the academics, especially in the development India. Its role and purpose in higher education. The previous education policies are very important and play an important role, but in the global when we see the global scenario, the country, all over the world is reaching and developing and updating their education policy. This is the demand of our country to updates and make an advancement for our education policy. Number 1 point I highlighted in this regarding, higher education significantly contributes toward the sustainable livelihood. In the new education policy, the national education policy NEP 2020, higher education significantly contribute towards the sustainable livelihoods. Sustainable livelihoods means development for all, multiple choices. The people become livelihoods in their special field
and increase their potential capacity to earnings and economic development. Especially economic development increase, open the all types of development in our life. Second point highlighted the holistic learning approach. Holistic means the all-round development. That my previous speakers multi-exit and multi-entry points. This is very important part. But the holistic development means you can see the pictures, work, learnings and life. The youngsters do not adjust the life, the academic life and the working life. So in this education policy, accommodate the work and learnings and workings in our life. They as well as both we can enjoy in your work and in your academic learnings and lives. Next point, technological integration. We are increasing the technological world, digital age, so it is important updates the technology integrations we can introduce and use more and more in education, technology and the digital platforms. Next point, skill development and vocational training. Skill development is very important at the present times all over the world for the every person. One skills you can improve your economic. At least one skills should be, must be adopted, learned for every person. Without skillful persons cannot be get the opportunity for the future in the any places. Next one is gender inclusivity and special education. Gender inclusivity. Gender inclusivity means the males, females, the remote peoples, the rural peoples, the urban peoples, the children, the youngsters, the trainees, all the peoples should be inclusive and make a holistic development, increase the gross enrollment ratios. Because some rural peoples, some other peoples increase left their education, left their academic journey in the middle. So I want to conclude only few minutes. Conclusion: ensure quality and essential accessibility of education. Ensure the new education policy ensure the quality and accessibility of education for the all pupils. Provide the better platforms and provide the good opportunity and provide the best syllabus and curriculum. Next point, improve gross enrollment ratio. In 2035, increase the 50% gross enrollment ratio in the education from primary, secondary and the higher education. Next point, integration of vocational trainings into higher education. Higher education is play the important role for the development of country and shaping the futures in the country and the publics. Next point, a special program for marginalized group. Marginalized group means those people who are a part of the academic lives. Those people comes under the academic trainings and provide the better facilities for their skills, development skills programs are running the present government. And many people and many courses, curriculums introduced in the college, in the polytechnic college, BTech college and the other vocational colleges, other IITs, IIMs. So it is very important steps to the government, taken by the government. Next, focus on the critical thinking and soft skills. Critical thinking is very important in the research, in the scientific method, in the data analysis, in the politics, in the entrepreneurship, and the soft skills provides the best human being and the humanities. The create the human ethical values in the human being. Without human ethicals and skills, you cannot develop yourself and your country. Thank you. Thank you so much. Thank you, PS Bro. So I am here to give my feedback from the part of Nirvanchal. The overall presentation was good. Friendship was maintained by all the members. Participants were confident. Content-wise presentation was rich. There are some plus and minus which was obvious because we are in learning phase. So overall presentation was good. There are some bugs for them on their pronunciations. I would like to call from the audience. Anybody want to ask any question? Please.
Okay. Now it's time for the experts. Okay. Just I want to ask one thing. Have you noticed any big shift with respect to the medical sciences in NEP 2020 with regard to the old NEP? Because it is a very interesting topic and you have gone through different papers and literatures. Is there any big shift when we talk about the health sciences and medical sciences? Yes. In the field of medical science, introduced the government NEET, a national level exams for the higher studies for MBBS and the MD, MS. So this is because the previous CPMT Just highlight the salient features. NEET is very good. and other many courses are open for the in the MBBS colleges. Many courses, just like a diploma and a short-term courses for the specialized or particular persons. That is, you can come in the vocational trainings, just like a vocational training, diplomas. So you can take a diplomas in the certain particular topics and serve and you can engage in the medical facilities. Certain course, nursing courses and others, pharmacy courses and the chemistry. There are many types of vocational and the diploma. And just like the diplomas, they are available for the particular purpose. In this NEP, there are good opportunity for the diploma and the national levels medical courses are available. Thank you. Now it's time for experts feedback. I would like to call Dr. Ahmed Sir to give their very Thank you very much for a nice presentation, nice refresher on NEP 2020. It's a very important topic, and again I congratulate the team for choosing a topic which was, for all the teachers here and the research scholars, it's a very relevant one. Overall, I found that there was a lot of depth in the issues which you have chosen. In the NEP, you focus on the higher education part. The NEP is a very comprehensive policy, so it touches various levels of education, including the primary. You focus on higher education, that is also very good. Specifically, Mr. Noor, when she started, I like the energy with which you started, and again, and your focus is on higher education. So you could have just a suggestion when you are starting, you could have just spelled out this very clearly that you will be focusing on these particular aspects of. So the audience actually gets to know that what is about to come. So they prepare their mind around that, so that it's about higher education, and we will be looking at these aspects as well as some of the issues which are addressed or not addressed in NEP. So it can be like this. So you can just start with this in the initial phase. Then moving on to Mr. Saif Ali. Yeah. So initially I found that your eye contact was a bit less. You were focused on one particular angle and focused on what you have to say. But in between you used some very good examples. So I really appreciate and like those examples. However, I found that there is kind of a little bit of repetition was there from what Mr. Noor has just said about the purpose of NEP and all. So you kind of repeated those things. And the transitions between what you were covering, like those transitions were not thought through, you know. So maybe iske baad ye. This is basically you can just work upon that. Maybe more smoother transitions and think about more relevant connecting words around that. For example, you could have subdivided, say for example, for teachers, these are the few points here. For students, these are the key points here. So you could have just divided on that. Okay, then Mr. Munir Zama, I think there was you started a little bit less confidently, but then you gained the confidence and you were very, your voice also became very
very powerful and very loud also. And however, I found that there was a lot of juggling between Hindi and English in between. So maybe you may use some when you are using, say for example, English, you may use Hindi words, or when you are so there is no restriction on that. But try to avoid too much juggling. Focus on one. And the examples which you used, there was less of connection between the topic, and sometimes they were more abrupt. They were not thought through. So even if, say for example, in this short span, you are giving just one example, just try to just focus on that example and try to convey that example properly, so that the audience can get it. Okay, this is what you mean. Okay, and then summarize it. Do not leave the example in between. That's so in between I found that there were things which were not connected properly. Your voice, and I think the best part was the confidence and the energy with which you even handled the question, and I think very good eye contact, very good voice, energy was there. Like I think it's mentioned by the Dronacharya group also, that there are things which you need to work on, especially related to your grammar and pronunciation. So if you can just work on those issues, I think there is a lot of potential in you as a very good presenter. So it's just and your handling of questions, and again when you are handling the questions, I would again advise everyone here that first try to understand the question, and maybe you can repeat the question, and so that you have understood the question. So you can just repeat and say that, okay, is this what we meant? So that will make your answer more succinct and more to the point. But overall, I found that's a very interesting presentation. Thank you. Thank you, sir, for giving very good feedback. Now, Mr. Gaurav will take over the stage. Thank you so much for the insightful feedback. In the continuation, now I would like to call the next group. The name of the group is Happiness Query, and I would also like to invite the coordinator group, which is Reference Allocator, to coordinate the presentation. Thank you so much.